Uh, Hi everyone. Very good day to you all. So first of all, I would like to put this thing on record that you know last two of my videos, the kind of response that I have received, it is quite overwhelming. I could see a lot of comments of you all, and uh, and I tried answering those comments as much as I could, and that really bolsters the confidence with which the video is made. Because मेरा कोई monetary पर्पस नहीं है वीडियो बनाने का, एंड नीदर दैट आई वांट टू float myself to the audience or to the or to any stream of channel. ऐसा नहीं है, बट द ओनली थिंग इज दैट जो समझ में आता है, जो मुझे लगता है कि जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, and if I can really leverage those past experience, my past experience into your benefits, अगर आप उस वीडियो से अपना कुछ बेनिफिट ले पा रहे हैं, तो इससे अच्छी चीज ना ही मेरे लिए कुछ और होगी, ना ही आपके लिए कुछ और होगी. So yeah, and I think my last video was on KJ Somaya, and in that video, I kind of promised that I'll be bringing up some video series or some more videos, in sharing my interview experiences. But with the rigor of MBA, executive MBA, वो हो नहीं पाया actually मेरे साथ. तो and उसके बाद job, तो I hardly I hardly got any time for uploading any video or sharing my thoughts. But yes, now I'm back again. So I'm thinking that I'll be sharing my MBA experience, what all happened with me, and right now where I am, and what were the things that led this transformation to me being, into a position where I'm right now. So yes, and if you can take away some of the points from any of my videos, then it's great. So let's get started. So the topic for today is, let me give you some background about myself. So in last 1.5 years, I was pursuing my executive MBA. So executive, so आज का वीडियो भी executive MBA के ही बारे में है, because the need that I felt that I'll quickly bring up my screen. Let me see to it. Yeah. Okay. Yes. Hope my screen is visible. Let me elongate this ताकि मैं अपने आप को देख पाऊँ. I think now it's cool. So the topic जो हमारा है executive MBA का है. So a word of caution here is you might be hearing a lot many things about executive MBA. So जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ, वो एक फुल टाइम एग्जीक्यूटिव एमबीए है. ठीक है, एक फुल टाइम वो एग्जीक्यूटिव एमबीए है. एंड एक मिनट में क्या हो रहा है यार. ओके. या या तो अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. हाँ, फुल टाइम एग्जीक्यूटिव एमबीए इन इंडिया. बिकॉज अगर हम IIM बैंगलोर की रिपोर्ट देखें, तो एग्जीक्यूटिव एमबीए फॉरेन कंट्रीज में तो बहुत ही प्रेवलेंट है ही, बट इंडिया में इतना प्रेवलेंट नहीं है. हाँ, हालांकि 2-3 साल के अगर हम रिकॉर्ड्स देखें और अगर हम कुछ डेटा एनालाइज करें, तो हमको ये पता लगेगा कि एग्जीक्यूटिव एमबीए इज नाउ गेनिंग दैट पॉपुलैरिटी. इसके 2-3 रीजन. पहला रीजन ये है कि if you are someone with more than 4 or 5 years of work ठीक है, तो it makes ideally no sense that you should be investing your 2 year in MBA, given that you already have some good amount of substantial experience, and a lot many things are not required at your end to learn. ठीक है, आपको इंटर्नशिप की जरूरत नहीं है. एग्जीक्यूटिव एमबीए में इंटर्नशिप नहीं होती, क्योंकि भाई आप ऑलरेडी 4-5 साल का एक्सपीरियंस लेके कॉर्पोरेट से आ रहे हो. ठीक है, तो इट मेक्स नो सेंस कि आपकी इंटर्नशिप हो और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हों लाइक बिजनेस एनवायरनमेंट, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा. So, and why we should do, or why anyone who is having an experience of more than 5 years or 5 years, why those people should go for an executive MBA. Because एक सबसे बड़ा रीजन है एक्सेलरेटेड ग्रोथ. आप जो भी आज आपका जो भी सीटीसी होगा, या जो भी आप या जो भी आप किसी लोअर मैनेजमेंट या मिड मैनेजमेंट रोल में, एग्जीक्यूटिव एमबीए करने के बाद जब आप
एक कंपनी ज्वाइन करते हो तो कंपनी टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, जो आपका इंटरव्यू होता है उसमें 70% ऑफ आपका जो इंटरव्यू का डिस्कशन होता है, दैट इज बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस। बहुत ही कम चीजें होती हैं जो आप अपने एग्जीक्यूटिव एमबीए से वहाँ लाइक कॉन्जुगेट कर पाओ। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट, और जो आपको वहां से ग्रोथ मिलती है वो बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है। मतलब योर ग्रोथ यू कैन से वुड बी 3x or 4x from what you were you know from what you were earning. The second advantage is short span of the course. Again, अगर आपको ऑलरेडी 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, मतलब 5 साल तो मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, 4 से 5 साल मिनिमम एक्सपीरियंस होना होना चाहिए। अगर आपको ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस है, देन 2 साल क्यों इन्वेस्ट करना, व्हाई शुड बी इवन इन्वेस्टिंग 2 years, एंड एक बात और कि जो मैंने देखा था कि जो 2 साल वाला एमबीए होता है उसमें जो बैच का कॉम्पोजिशन होता है, इट इज अ वेरी डाइवर्स कॉम्पोजिशन। डाइवर्स कॉम्पोजिशन नॉट इन टर्म्स ऑफ वर्क एक्स और द डोमेन ऑफ इंडस्ट्री, डाइवर्स कॉम्पोजिशन इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड एज ब्रैकेट। ठीक है, तो वहां आप देखेंगे कि फ्रेशर्स भी आ रहे हैं एंड 1 से 2 साल, जो जो उनका मेजोरिटी ऑफ द कॉम्पोजिशन होता है, जो मेजोरिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन होता है, दैट इज अकाउंटेड बाय people having 1 to 2 years of work ex. Imagine you are someone who is having 8 to 10 years of work ex, and then you will be sitting with someone who is having no experience or who is having only a very minimal experience. So I'm not saying it's a bad thing, but kahin na kahin, you're not able to echo, or you're not able to, I would say, resonate with their thoughts and with their mindset and with their practices, right? So that's one thing, that's another thing. और शॉर्ट स्पैन ऑफ द कोर्स मतलब 1 साल में, 1 साल का कोर्स होता है, 1 साल से 15 महीने का कोर्स होता है, एंड 8वें महीने में आपका प्लेसमेंट हो जाता है। तो आई थिंक इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि अगेन प्लेसमेंट में चीज काम आती है, वो आती है कि जो आपका सेम, आप हाउ वेल यू इंटीग्रेट योर पास्ट वर्क एक्स टू द एमबीए, राइट? सो ये मेन चीज काम आती है आपके वहाँ पर। Again, the third thing is it is best for the lower and middle management professionals. Gives a leap in your career, obviously. It is implied. It is not an explicit thing that I should be saying, it is implied. An exposure to different domains of industry to have a holistic view. क्योंकि जो आपका बैच होता है ना, जो आपके बैच का, अगेन जो आपके बैच की डायनेमिक्स होती है, डायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ जो वहाँ लोग आते हैं, मेरे बैच में जो लोग थे, दे वर एज एक्सपीरियंस एज 18 to 20 years, राइट, एंड स्टिल वो एग्जीक्यूटिव एमबीए करने आए थे। तो जो उनसे आपको सीखने को मिलता है, उस वो मतलब जो उनसे आप सीख के जो वैल्यू रियलाइज आप मतलब करते हैं, उस उसका जो आपको बेनिफिट मिलता है, उसका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट, क्योंकि जो मेरे बैच में थे, मेरे बैच में आई हैड पीपल ऑफ द एज 32, आई मीन 30 to 45, राइट? सो and it helped me a lot, from their experience I could inculcate my learning, when I was presenting that thing in my interview. So that really helped me, right? So now, and a complete transformative course for, I mean, again, एक जो transformation मिलता है, it has to be unsaid. ये transformation आएगा ही आएगा, क्योंकि MBA, एग्जीक्यूटिव एमबीए, कोई भी एमबीए, जब आप एक मैनेजमेंट का कोर्स पढ़ते हो, यू स्टार्ट गेटिंग टू नो द वर्क दैट यू वर डूइंग इन पास्ट, हाउ दैट इम्पैक्ट्स द एंड एनवायरमेंट, because you start connecting the dots, that suppose how a decision in operations can, how a decision in marketing can impact a decision in operations. Suppose I'll give you one example. Marketing team comes up with a research or comes up with an analysis that, okay, by studying the consumer behavior and their buying pattern and all those things, right, they come up with one deduction that मार्केट में अगर हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करें और इतने टाइम के बीच लॉन्च करें और इस प्राइस का लॉन्च करें, तो हम लोग को विल बी हैविंग अ स्पाइक इन वेन्यू। बट वो एट द एंड ऑफ द डे वो प्रोडक्ट बनाएगा कौन, और उस प्रोडक्ट को फैक्ट्री से एंड मतलब जो शॉप फ्लोर होगी वहां से मार्केट तक पहुंचाने में जो सप्लाई चेन इन्वॉल्व होगी, और जो मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे, लाइक वो चाहे आपका परचेजिंग प्रोसेस कह लीजिए,
या एग्रीगेट प्रोडक्शन प्लानिंग कह लीजिए, ऑल दिस वुड फॉल अंडर द ऑपरेशंस डोमेन, ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ओके, नाउ जब ये रिक्वेस्ट ऑपरेशन टीम के पास जाती है तो ऑपरेशन टीम कहती है ठीक है हम बना देंगे अगर इतने टाइम बनाना है, बट फॉर दिस वी वुड रिक्वायर सम more of some unique, not unique, but some more sophisticated technology, and we would be requiring more workforce. अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फाइनेंस टीम आ गई, क्योंकि फाइनेंस टीम को जब उन्होंने कहा कि हमें कुछ और एडवांस मशीनरी चाहिए, तो दैट रियली टॉक्स अबाउट इन्वेस्टिंग मोर ऑन योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। वेरिएबल कॉस्ट जो लेबर का है वो तो है, बट यस अगर फाइनेंस टीम चाह रही है कि, बट फाइनेंस टीम को भी देखना होगा कि जो हम द इन्वेस्टमेंट दैट वी आर डूइंग व्हाट बेनिफिट इट वुड ब्रिंग अस इन फ्यूचर, राइट। सो वहां पर आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो डिस्काउंटेड कैश फ्लोज कहा जाता है, ठीक है। द इन्वेस्टमेंट दैट यू आर मेकिंग पर डे, हाउ इट वुड गोइंग टू बेनिफिट यू इन फ्यूचर। सो एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी तो होती है, आई कैन रियली वाउच ऑन दिस। अब आते हैं, अब लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि यार एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए कौन से कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो कॉलेजेस का वील हैव अ डिटेल्ड सेशन जब मैं व्हेन आई विल बी शेयरिंग माय जर्नी ऑफ द एग्जीक्यूटिव एमबीए, बट यस जस्ट टू गिव यू अ हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग, here I'm not talking about part-time MBA course, part-time executive program जो Saturday Sundays को होते हैं। Here I'm also not talking about those executive MBA program जिनमें evening classes होती है। Here I'm talking about full-time residential MBA program, full-time executive MBA, full-time residential program, जहाँ पर you are just like any other student, लाइक उनके 2 ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं जैसे वो कैंपस में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, मेस का खाना खाते हैं, रेगुलरली सुबह उठ के क्लासेस जाते हैं, कैंपस में ही रह के असाइनमेंट करते हैं, मैं उन एग्जीक्यूटिव एमबीएस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो from my, I think, research, I could find, I was able to find some 12 to 11 college, 12 to 13 colleges. So I have listed down top 10 or 11 colleges for you. So, और ये जो अभी कॉलेज जो इस स्लाइड में देखेंगे, ये ऐसे कॉलेजेस हैं, ये टॉप नॉच कॉलेज हैं, ठीक है। एंड इनका जो एवरेज सीटीसी होता है मिनिमम टू मिनिमम 30 लाख होता है, ठीक है। So the first in this league is ISB, ISB Hyderabad. I mean, it is unsaid that if any college in India, you know, I think that has surpassed the standards of IIM Ahmedabad. मैं IIM Ahmedabad की बात कर रहा हूँ, बैंगलोर कैलकाटा की बात नहीं कर रहा हूँ। If any college that has surpassed the standard of IIM Ahmedabad in just a span of 10 years, वो ISB है, ठीक है। And इसका जो हम लोग, आई मीन डिटेलिंग होगा वो किसी और वीडियो में देखा जाएगा, बट अभी के लिए सबसे टॉप का कॉलेज है फॉर एग्जीक्यूटिव एमबीए। क्राइटेरिया क्या होगा, एलिजिबिलिटी होगी, विल सी इन लेटर पार्ट, नॉट इन लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो बट इन लेटर सीरीज ऑफ द वीडियो। सेकंड इज IIM अहमदाबाद। इसमें जो प्रोग्राम होता है इसको कहते हैं हम लोग एमबी एग्जीक्यूटिव PGDM कहते हैं इसको हम लोग। द थर्ड इज IIM बैंगलोर। इसमें भी 1 साल का कोर्स होता है, एग्जीक्यूटिव फुल टाइम एमबीए होता है। द फिफ्थ इज IIM कैलकाटा एंड द सिक्स्थ इज एक्सिलराई। इसमें भी एग्जीक्यूटिव एमबीए होता है, कोर्स का नाम है PGDM इन जनरल मैनेजमेंट। ये भी 15 मंथ्स प्रोग्राम है। एंड नाउ ये तो कॉलेजेस हो गए जो एकदम टॉप 5 कॉलेजेस हैं। उसके बाद कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो एग्जीक्यूटिव एमबीए करवाते हैं, बट जो उनका पैकेज होता है, जो उनका एवरेज पैकेज जाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल बॉइल्स डाउन टू भाई, मतलब सीटीसी क्या क्या तुम्हारा हुआ, मतलब सीट मतलब कितने का प्लेसमेंट हुआ, क्या सीटीसी है, यही 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 पूछते हैं। मीन इट्स वन क्वेश्चन दैट कम्स टू माइंड ऑफ पेरेंट्स, ऑफ स्टूडेंट्स, ऑफ योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन रेड दैट इन कॉलेजेस से वो करोगे तो इनका एवरेज सीटीसी 30 लाख होता है, इन कॉलेजेस से करेंगे तो एवरेज सीटीसी इनका 25 लाख है। So the colleges that falls under this ambit of having, of where the CTC is 25 lakhs are IIM Shillong। इसमें भी एग्जीक्यूटिव एमबीए फुल टाइम होता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, इस इनका जो प्रोग्राम है IPMX प्रोग्राम है। आई हैव मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स जिन्होंने इस कॉलेज से IPMX किया है। तो जो ये कॉलेज है इसका जो
एग्जीक्यूटिव एमबीए का प्रोग्राम है वो IIM लखनऊ नोएडा कैंपस में होता है, तो सेक्टर 62 में इनका नोएडा कैंपस है। तो एग्जीक्यूटिव एमबीए का जो एग्जीक्यूटिव एमबीए वहाँ उनका होता है, IIM लखनऊ लखनऊ कैंपस में नहीं होता है। द थर्ड इन दिस लीग इज SP जैन, एंड द फोर्थ इन दिस लीग इज IMT गाजियाबाद, जहाँ से मैंने खुद मैंने एग्जीक्यूटिव एमबीए किया है। एंड द other colleges, MDI Gurgaon. Another very, all these colleges are, I mean, very good. It's just that they are not having the stature, of those colleges that we have seen in our previous slide. IIM Ahmedabad, Bangalore के, I mean, उनके स्टैचर के कॉलेज नहीं है, बट अगेन ये सारे बहुत ही अच्छे कॉलेज हैं। स्टैचर के कॉलेज इसलिए नहीं है बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट्स, एंड प्लेसमेंट्स जैसे आप, और प्लेसमेंट्स इनका 25 लाख का क्यों होता है, इनका 30 लाख का क्यों होता है, दैट्स जस्ट बिकॉज कि एक जो एलुमनाई नेटवर्क होता है ना, जो एलुमनाई कार्टेल होता है हर कंपनीज में, वो प्रेफर उन्होंने एक कुछ अपना, लाइक मैं कहूँगा, कैटेगराइजेशन किया हुआ है कि भाई अगर हम IIM अहमदाबाद जाएंगे, बैंगलोर जाएंगे, ISB जाएंगे, तो हम 35 लाख का पैकेज देंगे या 32 लाख का देंगे। अगर हम इन सारे कॉलेजेस जाएंगे तो हम मतलब 25 से 30 लाख का पैकेज देंगे। बस ये बाकी on the grounds of faculties and facilities and the course pedagogy and the inclusions and the output as in what you learn is totally, totally remains the same. So there is no difference at all. I can say, because I've been interacting with the guys from I'm Ahmedabad, I'm Bangalore, I'm working with the guys, you know, uh, you know, who have done the same course from I'm Ahmedabad, Bangalore, and Calcutta. So I don't feel, on the knowledge point of view, on the knowledge front, and on uh, presenting yourself in a way that okay, the other person should realize that okay, आपको knowledge है, आपको है, आप सीख के आए कुछ, तो मेरे को कुछ इतना अंतर नहीं लगता, ठीक है। एंड द सिक्स्थ कॉलेज इन दिस लीग इज IIM उदयपुर। तो IIM उदयपुर में दो कोर्सेज होते हैं, एंड इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता है। इससे जो पहले के जितने कॉलेज हैं अपार्ट फ्रॉम IIM उदयपुर, इससे पहले के जितने मैंने कॉलेजेस दिखाए थे, IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, इन सब में आपको मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस वो चाहिए होता है, बट IIM उदयपुर में 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तो इनके दो प्रोग्राम हैं, एक है PGDM इन डिजिटल एंटरप्राइज मैनेजमेंट, और दूसरा है ग्लोबल सप्लाई चेन, PGDM इन ग्लोबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आई थिंक द नंबर ऑफ इनटेक इज 30। इसके लिए अलग से अगेन आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेलिंग ऑफ ईच ऑफ द कॉलेजेस, बट एज एंड व्हेन जो मुझे मेरे दिमाग को स्ट्राइक करा, जो मेरे दिमाग को हिट करा, तो मैं वो आपसे शेयर इसी वीडियो में मैं बोल दे रहा हूँ। नाउ how I decided that I should be pursuing executive MBA, ठीक है। ओके, सो इससे पहले इंक्लूजन्स क्या क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोग, मतलब सबके दिमाग में ये होता है कि भाई ये चीज मतलब एग्जीक्यूटिव MBA तो है, बट स्टिल पीपल थिंक दैट इट इज नॉट दैट रेगुलर MBA, एंड पीपल स्टिल काइंड ऑफ दे discriminate or they single out executive MBA when they compare it to 2-year MBA, right? See, one thing is for sure, even I am Bangalore की research report में भी आया है कि in days to come ना, this 2-year MBA would be losing its shine. It would going to phase out. It would be phased out because of the simple reason इतना किसी after working, क्योंकि एक वर्किंग प्रोफेशनल है, उसको अपनी जॉब भी नहीं छोड़नी, ठीक है, उसको अपनी जॉब भी नहीं छोड़नी, और उसके पास इतना टाइम भी नहीं कि वो आगे जाके मतलब इतनी कैट की प्रिपरेशन करे, या तो एज अ रिजल्ट उसके इतने अच्छे परसेंटाइल नहीं आ पाते हैं, ठीक है, कि वो उसके 95 98 परसेंटाइल नहीं आ पाते कि वो किसी अच्छे IIM में एडमिशन ले सके। एंड एग्जीक्यूटिव MBA का जो क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा सा रिलैक्स होता है, ठीक है। हालांकि ये जीमैट स्कोर पे भी काफी डिपेंडेंट होता है, बट अगेन जीमैट और कैट को हम कंपेयर नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी एंड इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग, ठीक है। सो अगेन क्योंकि इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि वो 5 6 साल या 10 साल नौकरी करे, और जब उसको लग रहा है कि यस नाउ इज अ टाइम प्रोबेबली देन व्हेन आई शुड बी सीइंग द अदर साइड ऑफ द इंडस्ट्री, है ना।
and whether I should be involved in more strategic decision making processes. So that's when a person decides कि उसको executive MBA करना है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं है, उसकी शादी हो गई होगी, उसके पास और लाइबिलिटीज होंगी, ठीक है, तो एक साल इज इनफ आई थिंक, इसलिए। तो इंक्लूजन्स क्या क्या होता है executive MBA में? अगेन आई एम स्ट्रेसिंग ऑन, इट्स अ फुल टाइम रेजिडेंशियल प्रोग्राम, और हर MBA प्रोग्राम में एक इंटरनेशनल इमर्जन होता ही है। इंटरनेशनल इमर्जन, it essentially means that a term, which could span between 4 to 6 weeks, आपको यूरोप या कहीं बाहर की कंट्री में आपको वो टाइम स्पेंड होता है करना। तो वहां पर ऐसा नहीं घूमने जाते हैं, वहां पर भी पूरी प्रॉपर मतलब पढ़ाई होती है, ठीक है। इसके बारे में भी अलग से वीडियो मैं शेयर करूंगा, जहाँ पर आई बी शेयरिंग माई इंटरनेशनल इमर्जन एक्सपीरियंस। Personal growth labs are very important. It is something which is outbound growth, जहाँ पर आपको एक कैंपिंग करवाते हैं, और उस कैंपिंग एंड द रिजल्ट्स एंड द प्रोसेसेस दोस आर इन्वॉल्वड इन दोस कैंपिंग, वी काइंड ऑफ मैप दोस प्रोसेसेस इनटू आवर रियल कॉर्पोरेट लाइफ, ठीक है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड 15 मंथ्स का कोर्स होता है इसमें। एक बात और है, ये कोर्स बहुत ही ज्यादा रिगरस है। आपको एक मतलब, अगर टर्म 0 छोड़ दो या टर्म 1 छोड़ दो, टर्म 2 से आपको टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि बैक टू बैक क्लासेस होती हैं, फिर असाइन, और हर सब्जेक्ट का हर सब्जेक्ट का एक इंडिविजुअल असाइनमेंट, एक ग्रुप असाइनमेंट, फिर इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन, ग्रुप प्रेजेंटेशन, बहुत ही रिगरस होता है। तो we'll be covering all these points, all these boxes in details in the videos to come. And the other thing is सर्टिफिकेशन। एक सर्टिफिकेशन आपको ये लोग करवाते हैं, वो चाहे तो KPMG का हो सकता है, वो चाहे तो मतलब बिजनेस एनालिटिक्स का होता है। एंड एग्जीक्यूटिव MBA में यू गेट, क्योंकि बैच साइज छोटा होता है, आई मीन 50 से 60 का बैच साइज होता है। तो MBA कॉलेज इन इन कोर्सेज में क्या होता है, दैट यू हैव अ रेगुलर इंटरेक्शन विद द कॉर्पोरेट लीडरशिप, जो आप उसको कह लीजिए मैनेजमेंट सेशंस होते हैं, ठीक है, लीडरशिप सेशंस होते हैं, जहाँ यू गेट व्हाट सी व्हाट अ corporate leader thinks, or what's the company's vision, and how are they achieving those vision, and what all developments they are trying to bring, and what future plans they do have। तो मतलब, क्योंकि मैं अपने, आई कैन रियली टेल दिस फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद कुछ नहीं तो 5 से 6 CEOs। और CEOs तो कोई ऐसी छोटी मोटी कंपनीज के नहीं, CEOs ऑफ लाइक किंगफिशर, लाइक यूनाइटेड ब्रेवरीज, यूरेका फोर्ब्स, Amazon, नॉट Amazon का CEO बट यस Amazon के वाइस प्रेसिडेंट से हम लोग का सेशन हुआ था। तो आपका, जब आप उनसे क्वेश्चन करते हो ना उन्हीं के कंपनी के बारे में, बाय लुकिंग at their financials or balance sheet, so the kind of confidence that you get, yes, if I'm asking, if I can ask CEO a very hard question, then मैं किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, एंड मैं किसी के भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकता हूँ विथ फुल कॉन्फिडेंस। नाउ I'll talk about my decision of getting into executive MBA. So let me take this opportunity to to inform you all this thing, or to share with you all this thing, that मैंने भी एग्जीक्यूटिव MBA किया था, और जो कॉलेज था, आई हैव डन माय एग्जीक्यूटिव MBA फ्रॉम IMT गाजियाबाद, एंड द स्पेशलाइजेशन वाज, ये लोग स्पेशलाइजेशन भी करवाते थे, एंड माय स्पेशलाइजेशन वाज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, और यू कैन से IT मैनेजमेंट, क्योंकि आई हैव had a past experience of working into an IT company, and मेरा जो डोमेन था वो क्लाउड डोमेन था, तो आई थॉट दैट इट्स बेटर दैट आई शुड बी यू नो leveraging the past experience into my MBA, तो इसीलिए मैंने इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से MBA किया था। बट हाउ डिड आई एक्चुअली गॉट इनटू बट हाउ डिड आई एक्चुअली गेट इनटू एग्जीक्यूटिव MBA? Because frankly speaking, I had no plans of pursuing executive MBA। मैं तो कैट की तैयारी मैं कर रहा था, बट अगेन I was a working professional. I was thinking that I should be preparing for CAT, and I was preparing for CAT from the last 2 years, like from 2019, and literally because I was into you can say mid
करियर क्राइसिस में था मैं, ठीक है। वेयर फ्रॉम वेयर मेरा जो मैं जॉब जॉब में जो परस्यू कर रहा था, मेरा उसमें इतना काम करने का मन भी नहीं वो लग रहा था, बिकॉज I never wanted to be a software engineer for gaining some experience, was fine for me, but I never wanted to, that was my profession, but I never wanted to pursue that software engineering as my career. So this question came to my mind कि मैं क्या करूँ, right? So that's when uh, I decided that yes, I mean टाइम, पहली बात तो टाइम था कम, ज्यादा कुछ इंक्रीमेंट हो नहीं रहा था, एंड बिकॉज आई वाज इनटू अ मिड करियर क्राइसिस, एंड आई रियली डू नॉट वांटेड टू pursue this software engineering or the software development engineering as my career going forward. So that's when I decided that yes, I should be doing MBA. क्योंकि अब हुआ क्या कि 4.5 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो गया था, एंड आई वाज गिविंग इंटरव्यूज, और मेरे परसेंटाइल भी इतने अच्छे नहीं थे। आई मीन अब मेरे परसेंटाइल जो थे वो 83 परसेंटाइल थे। अब 83 परसेंटाइल में क्योंकि मेरे जॉब थी और इतनी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाई, तो अब 83 परसेंटाइल में कोई IM तो लेगा नहीं, ठीक है, ना ही कोई अच्छा कॉलेज लेगा। लेकिन उसके बाद भी मैंने काफ़ी सारे कॉलेजेस के जो जो कॉलेजेस की कॉल आ रही थी, मैंने मैंने उनके इंटरव्यूज दिए। बट देन आई डिसाइडेड दैट, बट देन somebody told me, and then somebody enlightened me that now that you have good amount of experience, why you should be doing, the executive MBA. So I said yes, but what's that executive MBA? By executive MBA do you mean जो पार्ट टाइम MBA होता है? तो वहीं से मेरा मिथ ब्रेक हुआ एग्जीक्यूटिव MBA का, एंड देन आई स्टार्टेड connecting with the alumni of IMT Ghaziabad, and I started searching their LinkedIn profile कि उन्होंने किस बैच के थे वो, और आज एग्जीक्यूटिव MBA जो करके वो कहाँ पर हैं, आई मीन आर दे एस्टैब्लिश्ड और नॉट। And after my full research, I decided that yes, since IMT, since IMT is IMT, it's a 44 years old college, and it has a very good alumni network, and एक जो I mean legacy है IMT की वो है मेरे पास, and faculties तो obviously, क्योंकि faculties तो मैंने जाके देखा वहाँ पर। So that's when I decided that yes, टाइम भी है कम, टाइम भी कम है, इंक्रीमेंट भी नहीं हो रहा है, MBA भी करना है, फील्ड भी छोड़नी है। That's when I decided that yes, I should be pursuing executive MBA. So that's how I got into executive MBA, and I would like to say, and I would like to again put this thing, on the air, that this 15 months journey, was truly a transformational journey for me. It made me what I am today. It has empowered me that now I can, that now I feel not, more than knowledgeable. I feel that yes, I have the capability of understanding the macro environment and the business environment, and carving out a solution, because that's very important in a business, ठीक है। जब आप कोई solution देते हो एज एन यू नो एज एज ए मैनेजमेंट कंसल्टेंट, आप जब कोई सोल्यूशन देते हो तो आपको बस उस बिजनेस के तो बारे में मालूम होना ही चाहिए, बट आपको एक पूरा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, एक मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, जहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ आ जाती है, जहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज आ जाती है, जहाँ पर आपके कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, जहाँ पर आपका प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी आ जाती है, आपका लाइन एक्सटेंशन आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। तो वो सब देखते हुए आप क्लाइंट को क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करते हो, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक MBA आपको यही, एक जो MBA है, 1 साल का MBA आपको यही पर्सपेक्टिव देता है। आपको वो सोल्यूशन नहीं बताता, बट आपको वो बताता है कि आपको सोल्यूशन के बारे में सोचना कैसे, लाइक व्हाट ऑल थिंग्स you should be feeding as your input, or what all things or what all parameters you should be, you know you should be considerate of while you are suggesting any solution, right? So we need to strike a balance between the two things, okay? तो ये आपको MBA देता है खासकर। तो I think that's all I had in this week, in this video. And yes, again, we'll be discussing the outcomes, and placements is one such roaring thing that becomes a central point of contact, because होता क्या है कि जब हम किसी
कॉलेज की साइट देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि उनके फैकल्टीज क्या क्या हैं, उनके फैकल्टीज कौन, उनकी फैकल्टीज की क्वालिफिकेशन क्या है, या उनके फैकल्टीज के कितने रिसर्च पेपर हैं। ऑल वी होवर इज द प्लेसमेंट टैब। एवरेज पैकेज कितना है, टॉप 10% का कितना है, टॉप 20% का कितना है, प्लेसमेंट भी आएगा, सब कुछ आएगा। आई विल बी शेयरिंग माई दिस इनक्रेडिबल जर्नी दैट आई हैड in IMT Ghaziabad over the past 15 months. So yes, looking forward for your responses. And should you have any questions, please feel free to drop in your comments. And if you think that क्योंकि एग्जीक्यूटिव एमबीए मतलब करने का, और जो फॉर्म्स उसके अभी आते हैं, ठीक है, इट्स नॉट दैट कि जैसे जो रेगुलर एमबीए होता है 2 ईयर का, उन लोग की अभी तक क्लासेस स्टार्ट हो गई। बट फॉर एग्जीक्यूटिव एमबीए, नाउ इज द राइट टाइम दैट यू शुड थिंक that okay, whether or not I should be getting myself into an executive MBA course. और अगर आप सोच रहे हैं तो then please like this video. I'm not saying that like this video because I'm doing it for you know uh, promoting myself. It's just that अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो इट इंक्रीजेस द रीचेबिलिटी ऑफ द वीडियो। आई एम नॉट सेइंग टू सब्सक्राइब और डू एनीथिंग, बट यस, इफ यू फील दैट इफ दिस वीडियो कैन रियली हेल्प any of your friend who is in a mid-career crisis and who is thinking of MBA, then please do share this video with him. So I think that's all I had. I'll take a leave and I'm waiting for your questions because I'm one such person. अगर मैं क्वेश्चन देखता हूँ, कोई कमेंट्स देखता हूँ, तो उसका मैं रिप्लाई हमेशा मैं करता हूँ. And I'll give you some contacts of mine. Feel free to connect with me over LinkedIn, over Gmail, or over YouTube. So that's all from my side. Thank you. Thanks a lot.